जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ऐसे है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है एएस इकोनॉमिक्स का ट्रेड का चैप्टर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से यूजुअली 12 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो आज हम कर रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म। सो बेसिकली प्रोटेक्शनिज्म का अगर हम मीनिंग देखें, सिंपल मीनिंग, तो इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स जो स्टूडेंट समझते हैं कि आप इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सो दैट आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकें, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकें। दिस इज बेसिकली प्रोटेक्शन। और करेंगे कैसे? हम टैरिफ लगा देंगे, एम्बार्गो लगा देंगे, कोटा लगा देंगे एंड विल डू दिस। बट प्रोटेक्शनिज्म इंपोर्ट को भी रिड्यूस करती है और एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करती है। मेनली we are focusing on imports की reduction through tariff, quotas, embargoes. But आपके सिलेबस में it is included and it can come and it can ask that how exports are increased through protectionism. So you can provide subsidy to local producers so that they can compete in international market. So this is what the protectionism is. So it is when government seeks to protect domestic industries from foreign competition. Protectionism involves the restriction of free trade. Like you will restrict imports that are freely coming into the country. What does this mean, free? It's not like free of cost. It means free from restrictions. So the tools of protectionism often seeks to increase the price competitiveness of domestic industries. तो नेक्स्ट चाहते हैं, सो व्हाट आर द टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड देयर इम्पैक्ट। तो जो फर्स्ट और बेसिक टूल है वो है टैक्स लगा देना या टैरिफ लगा देना। व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज अ टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड व्हेन प्रोडक्ट्स क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, चाहे वो इन हो रही हो या आउट हो रही हो। अब आप कहेंगे हैं सर इंपोर्ट पे तो टैरिफ लगता है, एक्सपोर्ट पे भी लगता है। यस, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी होती है। जब आपने डोमेस्टिक नीड को पूरा करना होता है तो सम टाइम कुछ कंट्रीज एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगा देती है। Tariffs are the best known tools for protectionism and are sometimes referred to as custom duties. So tariffs are taxed usually on imports, but they may also imposed on exports. अच्छा, अब जो टैरिफ होता है वो दो टाइप्स का होगा, स्पेसिफिक होगा और एड वैलोरम होगा। गॉट इट? सो स्पेसिफिक जो है वो लेट सपोज एक $100 की प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर $5 टैक्स लगा दें जी, बस $5 टैक्स। एंड हर प्रोडक्ट हर लेट सपोज सेल फोन है। अब सेल फोन की प्राइस 1000 है, 2000 है, 500 है, but the tax is $5. So the tax that is imposed fixed sum per unit, that is specific. So जो टैक्स परसेंटेज में अप्लाई होता है that is ad valorem, like 5% of the value of the product. अब एक सेल फोन 1000 का है, एक सेल फोन 2000 का है, तो दोनों पे अगर 5% लगाएं तो 1000 का 5% is more एंड 2000 का 5% इज लेस। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 50, यहाँ पे बनेगा 100। सो ad valorem tax is the second one. So there are two key reason why government impose the tariff. एक, हम डिस्करेज करना चाहते हैं इंपोर्ट को, लाइक डीमेरिट गुड्स हैं हम उनको डिस्करेज करना चाहते हैं। अनदर इज टू रेज द टैक्स रेवेन्यू। यस, गवर्नमेंट ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, यू वांट टू इंपोर्ट, यस यू कैन इंपोर्ट बट पे द टैरिफ। सो इंपोर्ट टैरिफ अभी हमारे पास बता चुका हूं मैं, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, प्रोटेक्शनिज्म में एक ही ग्राफ है, दैट इज द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। अब ये डायग्राम बहुत इजी है। दिस इज सिंपली सप्लाई, दिस इज डिमांड, और डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम इज हियर लाइक दिस पॉइंट। तो जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, 1 मिनट, ये दिस इज योर इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इधर प्राइस को मेंशन कर दूं तो दिस पी स्टैरिक हियर, दिस वन इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है 30K। दैट इज ये कोई कार की प्राइस है।
चाइना हमें ऑफर करता है कि देखो भाई बात सुनो, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एट योर इक्विलिब्रियम एंड योर प्राइस इज 30K, आई विल ऑफर यू सेम कार एट 10K। अब 10K का मतलब यही है कि $10,000 पे मैं आपको सेम कार ऑफर करता हूँ। इफ दिस हैपन्स, इफ दिस हैपन्स देन चाइना का जो सप्लाई होगा, वो कलर चेंज करते हैं तो चाइना का सप्लाई जो है वो दिस ब्लू लाइन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, दिस वुड बी द सप्लाई। गॉट इट? चलें सर थोड़ा डार्क कर लेते हैं ये। अब अगर ये सप्लाई हो जाएगा तो देखें, इफ चाइना इज ऑफरिंग अस दिस प्राइस तो हमारी डोमेस्टिक प्राइस भी कम हो जाएगी। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को मूव करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। ठीक है, सो सप्लाई विल फॉल from point A to point B. Up domestic supply, this one QS, this is domestic supply. But at this price, producer is a consumer is demanding Q3. This is domestic demand QD. So this is the demand at this price. This is the supply. The difference of QS and Q3, this difference is import. ये जो import है, like you can search it like this, you can just show it like this. ये आपके पास क्या है? This is your imports. Let's suppose this is domestic supply 10, domestic demand 40, 30 is your import. अब क्या हुआ कि domestic producer will find it difficult to compete with this China who is selling so low. Like local price हमारा ये है, he's selling at P, it's too low. So government के पास वो जाएंगे and bro tax लगा दो यार, ये तो बहुत loss में जा रहे हैं। ठीक, you are in the loss, will help you out. तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? 100% टैरिफ लगा देगी। अब मेरी एग्जांपल क्या थी याद है? $10K के ऊपर कार आ रही है, गवर्नमेंट 100% टैरिफ लगा देगी। 10 वाली प्राइस कितनी हो जाएगी? 20, तो ये P1 पे आ जाएगा। सो योर न्यू लाइन वुड बी दिस वन विद टैक्स। ये अब ये डार्क ब्लू, ये देखिए लिखा क्या हुआ? वर्ल्ड सप्लाई विद टैरिफ, तो ये टैरिफ लग गया। सो नाउ योर सप्लाई इज दिस। अब आप यहाँ देखें, इफ यू कैन सी, मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि डार्क ज्यादा है। Now if you can see this, तो ये मैं रेड लाइन ले लेता हूँ। Yes, this is what. Okay, now at this price जो टैरिफ लग गया, local supplier is happy, he will move from B to point C. Previously वो A से B गया था, now is at C. Now local supply has increased from Q to Q1 because supplier is happy, he will move up. But demand will fall because as price rise, demand will fall from D point to F point, supply will fall. Previously demand was Q3, now demand Q2, demand is. What is the difference that is left? If you closely see this green line, your green area, this green area, this is your import. Now this is the import. Previously क्या import था? This much. Now कितना है? ये वाला. So import has reduced. This is basically the protection that is given to the local producer. Now government को revenue कितना मिलेगा? This is the government revenue, this line. वो कैसे पता चला? This is the tariff and this is the import after tariff. So this box is import tariff. So this box is revenue of the government. Sorry, आगे चलते हैं। टैरिफ का मैंने बता दिया। एक्सपोर्ट टैरिफ मैंने अभी आपको बताया कि क्यों अप्लाई होता है। गवर्नमेंट इम्पोज एक्सपोर्ट टैरिफ्स, ठीक है जी, सो दैट कि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो डिमांड है उसको फुलफिल दें करें और उसको प्रायोरिटी दें। और समटाइम गवर्नमेंट वांट्स टू अर्न समथिंग, तो दिस इज व्हाट। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इनइलास्टिक वर्ल्ड वाइड। लाइक यूएस इम्पोज एक्सपोर्ट टैरिफ ऑन देयर वेपन्स, ठीक, तो वेपन्स तो लेना ही लेना है। अगर OPEC applies tariff on their exports of oil, तो oil भी inelastic demand है, people will buy that, so government earn भी कर लेती है। Next, tariff हो गया। Next is your embargo. Next is import quota. Import quota is basically physical restriction on import. Like you will be restricted here in this protectionist measure that you can't import more than 100 cars from Japan this year. Like in tariff there was no restriction on quantity, but यहाँ पर आपको restriction लगा दी है कि you will not able to import more than 100 cars. That's it. Next, export subsidy. Okay, to protect producers locally, to make him competitive and to improve जो है
the competitiveness and export of the country. तो क्या होता है, कंट्री क्या अप्लाई करता है, कंट्री अप्लाइज एक्सपोर्ट सब्सिडी, फाइनेंशियल ग्रांट टू द प्रोड्यूसर्स. गॉट इट. ये होता है जी. नेक्स्ट, एम्बार्गो. एम्बार्गो इज टोटली बैन. लाइक सम टाइम क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, या सॉरी लोकल गवर्नमेंट है, वो लगा देती है एम्बार्गो, टोटल बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. ठीक है. एन एम्बार्गो इज कंप्लीट बैन आइदर ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इंपोर्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री. दिस इज व्हाट. देन नेक्स्ट इज वीईआर, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट. वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से ही अपनी एक्सपोर्ट पे बैन कर देना. ठीक है. ये कैसे होगा? लेट्स सपोज पाकिस्तान चाइना को रिक्वेस्ट करेगा कि ब्रो चाइना, यार ये प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में, don't send these product, otherwise we will not trade with you or we will place embargo on your product. Yes, then China ka government will announce that okay, we will not send these product to Pakistan. That's it. So China voluntary export restraint karega. China will announce that okay, we are going to protect the rights, और हम क्या कर सकते हैं कि हाँ यस राइट्स ही कह सकते हैं, इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्रेंडली कंट्री. तो इस तरीके से वो अनाउंस कर देंगे. So excessive administrative burden, like make the system complicated, no one can import. This is administrative burden. ठीक है, जिसे red tape भी कहते हैं. Like lots of approval for imports and documentation, so that importer may discourage. Exchange control. So exchange control भी एक protectionist measure है to control imports, जैसे पाकिस्तान में currently apply भी हो रहा है कि don't give dollars to importer. ना उनके पास डॉलर होगा ना वो इंपोर्ट करेंगे, बिकॉज ये डॉलर यूजली सेंट्रल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, एक्सचेंज कंपनी से बाय करते हैं. तो गवर्नमेंट विल प्लेस अ लिमिट दैट कैन बी जस्ट लाइक बॉट. ठीक है, फ्रॉम द एक्सचेंज कंपनीज. नेक्स्ट, व्हाई वी शुड अप्लाई द टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो टाइप ऑफ थिंग्स. सबसे पहले क्या है, अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे प्रोटेक्शन देनी है. उसमें भी कौन सी, इन्फेंट इंडस्ट्री. इन्फेंट इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो न्यूली स्टैब्लिश इंडस्ट्री होती है उसे कहते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री. व्हाट्स द सेकंड वन? द सेकंड वन इज डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री. इसे सनसेट भी कहते हैं, ऑलरेडी इन द लॉस, उसे प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंपटीशन से. स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, तो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री का वो मतलब होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री. फूड हो गया, वेपन हो गया. डंपिंग, डंपिंग होता है सम कंट्रीज आर सेलिंग प्रोडक्ट्स इन योर कंट्री बिलो द कॉस्ट, तो आप उससे भी प्रिवेंट करेंगे. Improve the term of trade. Term of trade का मतलब है you will pressurize them to decrease their price. ठीक है, when you place tariff on them. So this is what the next, improve the balance of payment. Yes, you want to reduce import and improve export. This is improvement in balance of payment. Okay, to provide protectionism from the cheap labor. Some countries employ cheap laborers. They don't pay them proper wages and in hygiene conditions. So exploitation of labor is not tolerated by IMF, World Bank type of institutions. So they place the restrictions, and even WTO. So they just like countries prevent themselves rightfully that they are using child labor to decrease their cost. So this is what they place tariff quota on them. So these are the details. आप पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत बेसिक है ये सारे का सारा पॉइंट्स. और आगे जाते हैं, बस लास्ट हमारे पास रह गया. द लास्ट वन इज व्हाई वी शुड नॉट प्लेस टैरिफ. अच्छा, एक अदर रीजन में ये भी है कि यू हैव रिटेलिएटेड. इफ यू हैव प्लेस टैरिफ, दे हैव रिप्लेस टैरिफ. ओके, अच्छा. सो इफ यू विल स्टार्ट दिस प्रोटेक्शनिस्ट measures, it will be considered as act of war type of thing, and risk of trade war will start. Okay, तो क्या होगा, argument against the protectionism, why we should not apply these tariff quotas and embargoes. So first, it prevent countries from specializing in product in which they have a comparative advantage. Okay, so when you are protected under tariff, so kya hoga, you will become inefficient, you will not develop your comparative advantage. Okay, next, reduce international competitiveness, and so increase prices and lower quality of the product because of these protectionists. Reduce the choice of the product because consumer is unable to import because of embargoes, maybe high tariff. Lower size of the firms, markets reduce हो गई ना, because you are not allowed to go freely
in international market reduce from choice of raw material because now raw material is expensive to import, a result in trade wars I have just told you. So this is what मुझे लगता है कि the chapter has ended. अभी देख लेते हैं. So yes, the chapter has ended. So next lecture के लिए I will just upload the new video. Thank you very much. Assalamu alaikum.